Hello everyone, a very good evening to you all. I am Avinash and as usual I am before you with certain landmark judgments given by Honorable High Courts and Supreme Court. So in its course today we shall be discussing a very recent judgment given by the Honorable Allahabad High Court. इसके पहले फैक्ट्स को समझते हैं कि इसमें विवाद क्या था कि that is there any difference or distinction between the judges appointed under Article 217 of the Constitution that who are permanent judges and those judges who are appointed under Article 224 of the Constitution who are acting judges or additional judges of the High Court. My dear friends and my dear viewers, you all know that कि जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, उसमें आर्टिकल 217 के तहत परमानेंट जजेस को अपॉइंट किया जाता है और आर्टिकल 224 के तहत एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जाता है और एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो फैक्ट ये था, इशू जिस फैक्ट इन इशू यहां पर ये है कि क्या दोनों में कोई डिस्टिंक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस है। आर्टिकल 217 के तहत जो जजेज अपॉइंट होते हैं और आर्टिकल 224 के तहत जो जजेज अपॉइंट होते हैं, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लेरिफाइड इट दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन between the judges who are appointed under Article 217 of the Constitution and those acting or additional judges who are appointed under Article 224 of the Constitution. The division bench of Honorable Mr. Justice Devendra Kumar Upadhyay and Honorable Mr. Justice Subhas Vidyarthi, they were listening to the facts, they were listening to the petitioner and they gave the judgment that there is no as such distinction. Both the judges, under both the articles, they both are duty bound to protect the Constitution. There is no difference regarding the work that they do and regarding the judicial functions, the judicial powers that they discharge. They both are having equal powers. If any judge, acting or additional judge, who have been appointed under Article 224 of the Constitution, if he does not discharge his duty, considering that he has been appointed under Article 224, then he is disrespecting the ideals of the Constitution, he is disrespecting the oath which he took under the Indian Constitution, right? कोई भी as such difference नहीं है, पावर का, फंक्शन का, वर्क का कोई डिफरेंस नहीं है। The only difference between them is that the additional judges, the acting judges appointed under Article 224 of the Constitution, they are basically, they serve for a limited time, limited duration, एक limited duration होता है, whereas the permanent judges who are appointed under Article 217 of the Constitution, they serve until they attain the age of 62 years. आप सब लोग जानते हैं कि 62 इयर्स हाई कोर्ट के परमानेंट जज का रिटायरमेंट एज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 इयर्स पे रिटायरमेंट होता है। तो एक ही बस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ही डिस्टिंक्शन को क्लेरिफाई किया, एक ही डिस्टिंक्शन को नोटिफाई किया कि बस सर्विस जो ड्यूरेशन है, टेन्योर का जो ड्यूरेशन है, उसी को लेकर के डिफरेंस है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उनका एक लिमिटेड टेन्योर होता है और इधर 62 इयर्स तक आप काम करते हैं और 62 इयर्स के बाद रिटायर होते हैं। और ये माता प्रसाद तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये मैटर, राइट? इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे भी रिलायंस प्लेस किया। आई होप दैट आई हैव क्लेरिफाइड all the details. I have given you the minutest details regarding the judgment given by the Honorable Allahabad High Court. Guys, wherever you are having problem in the law subjects, any subject, in any topic or any case law, you can send your question to our management desk or to our WhatsApp number on Instagram, Facebook, anywhere, wherever you like.
and we shall be giving you a conceptual talk, a conceptual clarity regarding that topic. Guys, stay tuned. Stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.